में जो हमने अ, नहीं, हम लोग ने लास्ट में क्या किया था वही मैं पूछ रही हूँ। एकदम लास्ट में। हाँ मैम, वही वही है ना। नहीं, एकदम एज इन बिफोर द रिवीजन की क्या। हाँ हाँ, बिफोर रिवीजन। हाँ वही। आई थिंक इसका थर्ड वन सेकेंड। zeroth law of thermodynamics is the heading and types हम्म। of thermodynamic process भी है। ओके। या वही टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस द लास्ट थिंग आइसोबैरिक प्रेशर यस यस यस, मैं वही डायनामिक बोल। वर्क, वो सब कुछ ही है। और हम लोग ने वो भी कर लिया था ना हमारा न्यूमेरिकल। हाँ हाँ, न्यूमेरिकल्स भी कराया था। कराया था ना। हाँ हाँ। हम्म। कितने, दो न्यूमेरिकल किए थे कि एक? हम्म, एक किया था I जिसमें think, तुम्हारा आंसर एक का है ना। आंसर आया था हाँ। ओके, ठीक है चलो। तो वी डिड ओनली द आइसो आइसोथर्मल, राइट? आइसोथर्मल कर लिया था कि नहीं किया था? आइसोबारिक। आइसोथर्मल, आइसोबैरिक का यू हैड मेड मी राइट, यस। वो हाँ, हो है गया ना, था। हाँ। बस हाँ चलो। क्लास चालू होने के पहले ना सब रेडी किया करो कि मैडम यहाँ पे ये लास्ट था, क्योंकि क्या, कुछ छूटना नहीं चाहिए। हाँ। ओके। Now today we will see about isochoric. भाई ये आइसोकोरिक क्या है? आइसोकोरिक का मतलब क्या है कि जब प्रेशर है वो कांस्टेंट रहता है, व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट। सो इसके अंदर में क्या होगा, डेल्टा पी विल बी इज इक्वल टू जीरो। ओके, सबसे पहले नंबर टू, इसके अंदर में हम देखते हैं कि थर्मोडायनेमिक वर्क। थर्मोडायनेमिक वर्क में क्या होगा, वर्क इज इक्वल टू प्लस माइनस पी डेल्टा वी। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? व्हाट डू वी नो? वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन लेंथ, है कि नहीं? एंड वी कैन राइट दिस ऑल्सो, दैट pressure into volume. Why? Why? Because pressure is kept constant. So we will have pressure into change in volume. So we have got this equation that W is equal to P delta V. And supposing, agar question me, if in question अगर आपको प्रोसेस नहीं दिया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कि रिएक्शन दे दिया है, इसके अंदर में प्रोसेस नहीं दिया है, देन व्हाट वी विल डू, वी विल कंसिडर इट एज आइसोबारिक। Why it is isobaric? It is isobaric because here process is not given.
Okay. So therefore, in this case, maximum process are carried out in open vessel. So अगर आपको proper नहीं दिया है तो इसका मतलब क्या है? Everything will be carried out in open vessel. Are you getting it? So आपको ना क्वेश्चन के अंदर में भी ये चेक करना बहुत जरूरी है. Done? No, teacher, just one second. Yes, teacher, done. Now next is isochoric. Now what is isochoric? Here core volume is kept constant. That is, we can say delta V is equal to 0. So thermodynamic work. Thermodynamic work done will be is equal to 0. So in this case, the pressure is changing, but volume remains constant. So in isochoric, what we see? Isochoric constant. Isochoric. Got it? Got it. Got it. Now next is isothermal. In this case, when temperature is kept constant, so we can say that delta T is equal to 0. Number 1. Number 2 is ideal gas equation. What is ideal gas equation? We know that PV is equal to nRT. Okay, so we can say that PV is equal to constant. So we can say that P1 V1 is equal to P2 V2. Right? Right, right. So, should I rub? Just 1 second. Almost done.
Done. Yes, teacher. Now we know that for ideal gas and isothermal process, then change in internal energy will be how much? Delta U is equal to 0. So we can say that internal energy is equal to kinetic energy. That will be means internal energy is directly proportional to delta T. This is equal to delta U is equal to 0. Means when internal energy is directly proportional to temperature, it means that delta T, in this case, what will happen? Internal energy is directly proportional to change in temperature, means internal energy will be is equal to 0. And all the ideal gas, isothermal, and moles are constant, right? It does not change. So we can say that change in enthalpy that is delta H will be what? 0. Got it? Yes, teacher. Now can you explain me? Just 1 second. Yeah, teacher. What exactly do I have to explain? In this case, change in enthalpy. Tell me that. Okay, 1 second. Um, okay, so basically, uh, enthalpy is the measurement of the energy in a thermodynamic system. So it will obviously look at the thermal values and the changes present in the substance. However, the in this above statement, the internal energy, the kinetic energy, is equal to delta U is equal to 0, which means that ideal gas, uh, the ideal gas का thermal value and the moles का value is remaining constant. So ऐसा कुछ change आ नहीं रहा है. So therefore, the change in enthalpy will also be 0. गुड. ये समझ आ रहा है ना? एक बार मतलब ऐसा नहीं हो कि अपन को वापस से रिपीट करना पड़े, है ना? एक बार नहीं नहीं क्लियर नहीं. हो जाए.
ठीक है, एक बार हो गया अच्छी क्लियर। बात है, क्योंकि ना अपन को अपना टाइम थोड़ी वेस्ट करना है बेटा, बहुत बड़ा सिलेबस है ना, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं इसके अंदर, तो ये समझ में आ गया ना एक बार थ्योरी, अब तुम्हें क्या करना है, रिवाइज करना है, ठीक है। सो चेंज हाँ, इन एंथैल्पी दैट इज डेल्टा एच विल बी इज इक्वल टू जीरो। सो हम लिख कैसे सकते हैं, हाउ वी कैन राइट दैट डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन number of moles of gas into R into T, and we can write delta H is equal to 0. Internal energy is 0. Number of moles are constant. So in delta H will be is equal to 0. समझ आया? समझ में आया। अब अगर हम इसका ग्राफ देखते हैं, तो मैं तुम्हें एक सिंपल ग्राफ का ही बता रही हूँ कि अगर हम इसका ग्राफ देखते हैं, सो व्हाट डू वी सी, दैट ग्राफ है वो लॉग पे चलाते हैं, तो हम लॉग पी है जो प्रेशर है, ओके, एंड लॉग जो वॉल्यूम है, उसके अंदर में हमको पता है कि अगर आइसोथर्म का प्रोसेस है तो पीवी क्या होगा, इज इक्वल टू के। सो वी कैन से दैट log p plus log v is equal to log k. Okay, so finally we can say that log p is equal to minus log v plus log k. और इसके अंदर में हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ग्राफ का इक्वेशन है ना, यहाँ तक लिखो फिर बताती ठीक है। हूँ। यस टीचर। Now next we will see that how the graph is formed. See, if I draw this graph, now my graph here will be log v, my x-axis. This is log v, volume, and this will show us, the y-axis will show us log k, okay, and this
slant lines. This slope will show this slope will be what? This slope is down. So we'll say negative. And this is log P, pressure. So basically, if we are using this value, then we will have log P will be minus log V plus log. Okay, you see the slope going down. So therefore, we are using minus log V. Okay. 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 Yes, ma'am. Done. Now, so this much you have understood. Now we'll go for the adiabatic process. Let me check if I can give you 2 to 3 numericals because this theory is pretty big. Yes. Chalo. Question is 90 gram of water is vaporized. That is H2O liquid gets converted into H2O gas. Then you have to find delta Ng. अब इसके अंदर में फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. चलो लगाओ.
हुआ? नहीं मैम, नहीं हुआ, रुको। इसमें याद रखना सबसे पहले रिएक्शंस लिखने हैं। मालूम है। Yeah, sir. Delta NG will be 5, right? हाउ हाउ 5? यस। Well, the given mass of H2 is 90 grams. फिर उसके बाद molar mass will be 18 grams per mole. So 5 moles of water. 5 moles of water are getting vaporized. Then by using the delta Ng formula, I'll have to do all of that. Then I'll get 5 times 1, I think, is equal to 5. हाँ ठीक है, ओके। अच्छा एक बात बताओ, उस दिन कैसे गड़बड़ कर रहे थे तुम? अरे मैम, सच्ची वो सच्ची। सच्ची में दिमाग दिमाग नहीं लग रहा था। ऐसे वो आकाश का पूरा पढ़ाई किया था। ये उसके एक दिन पहले, तो ऐसे दिमाग एकदम फॉगी था। वो तो ऐसा ही होता है, हाँ, वही आकाश में मैंने पढ़ाई। ट्राई किया पूरा ऐसे क्रैम्प
क्रैम करने का एक दिन में, क्योंकि उधर वो एक दो टॉपिक भी खत्म नहीं हुआ है एग्जाम के लिए, और वो लोग टेस्ट दे रहे हैं। हाँ तो टेंशन क्यों ले रहे हो? जिंदगी थोड़ी खत्म होती है बेटा, अपन को तो पढ़ाई करनी है ना। आकाश वो के तो टेस्ट करनी है। के इतने परेशान मत हो। हमारा टारगेट एकदम आगे वाला है, तो जो पढ़ना है एकदम अच्छे से पढ़ो। मतलब मेरे साथ तो पढ़ ही रहे हो, ऐसा तो है हाँ नहीं कि तुम्हें वहां पढ़ाते हैं समझ नहीं आता। तो जितना पढ़ रहे हो ना उसको एकदम परफेक्ट पढ़ो। और टाइम अवेलेबल है ना, तो मेरे पास भी टाइम होता है तो एक्स्ट्रा सेशंस भी हम ले सकते हैं। उससे क्या होगा, तुम्हारा खत्म होगा। अभी तो क्या है, छुट्टियां हैं, बाद में सेशंस एकदम पैक हो जाते हैं। इसलिए मैंने मैम को बोला था, तुम रात को भी लेते हो तो मैं रात को 10 से 11 पढ़ाती हूँ। तो मतलब ओके ऐसे ओके। टाइम नहीं है, बता रही हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि जितना तुम पढ़ोगे ना उसको अच्छे से पढ़ना है, उसको टेंशन नहीं लेना है। तुम्हारा वो वाला क्लास नहीं बिगड़ा? बिगड़ा ना? देखो आज हाँ कितना अच्छे बिगड़ा। से। हाँ, तो हमको ना हमारा एक भी क्लास नहीं बिगाड़ना है, उस पे चलो। ओके। अदरवाइज यू आर ब्रिलियंट, यू आर रियली वेरी ब्रिलियंट बॉय, इतना अच्छा कर रहे हो तुम, है ना? हाँ चलो ठीक, हम अब नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट इज एडियाबैटिक। अच्छा, एडियाबैटिक के बारे में कुछ आइडिया है बेटा? व्हाट इज इसके एडियाबैटिक? एडियाबैटिक नहीं नहीं नहीं। एडियाबैटिक एडियाबैटिक का मतलब क्या होता है? सबसे पहले, नो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट विथ सराउंडिंग। इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स दैट Q is equal to 0. Number one. Number two, a PV is what? Constant. ठीक है? दूसरा, temperature volume is constant and temperature pressure is constant. तो हम क्या बोलते हैं कि constant is equal to Cp by Cv। जब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, इसका मतलब एडियाबैटिक का मतलब क्या होता है? नो चेंज। ठीक है ना? सो एडियाबैटिक इन विच नो हीट इज ट्रांसफर्ड इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम, एंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये कैसे होता है? इट इज ओनली बाय द वर्क डन। सो मेजर प्रोसेस थर्मोडायनेमिक्स में क्या होते हैं? डायबैटिक, डायबिटीज नहीं, डायबैटिक। डायबैटिक मीन्स वो ट्रांसफर करते हैं हीट, और एडियाबैटिक मतलब नो हीट इज ट्रांसफर्ड। ओके, सो एडियाबैटिक प्रोसेस कैन बी आइदर अ रिवर्सिबल और इट कैन बी रिवर्सिबल। सो अगर एडियाबैटिक प्रोसेस को टेक प्लेस करना है तो आपको क्या देखना है? सबसे पहले देखना है कि जो सिस्टम है it should be totally insulated। क्या है? सिस्टम में टोटल इंसुलेशन होना जरूरी है, पहला। दूसरा, जो प्रोसेस है उसको जल्दी करना चाहिए, यानी प्रोसेस मस्ट बी कैरीड आउट क्विकली। उससे क्या होगा? so that there is sufficient amount of time for heat transfer to take place। अब जैसे कि हम गैस को कंप्रेस करते हैं इंजन सिलेंडर, तो हम क्या करते हैं? बहुत फास्ट करते हैं।
तो उससे क्या होता है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है ना सिस्टम में, वो प्रोड्यूस कर सकती है और उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट। लेकिन सिलेंडर तो क्या है, सिलेंडर नॉन इंसुलेटेड है, लेकिन फिर भी हम इसको बोलते हैं एडियाबैटिक। सो एडियाबैटिक का अगर मुझे इक्वेशन लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, पी वी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये गामा क्या है, गामा को हम बोलते हैं एडियाबैटिक इंडेक्स। ओके, या इसको कई कई बार हम बोलते हैं पॉइजन रेशियो। पॉइजन ने डिस्कवर किया था, इसीलिए पॉइजन रेशियो। अरे गेटिंग? यस टीचर। सो अगर हम इसको आगे स्टडी करें, सो व्हाट वी विल राइट, गामा इज इक्वल टू, जैसे मैंने बताया, सीपी बाई सीवी, मीन्स एडियाबैटिक इंडेक्स is equal to Cp by Cv, or we can write down this PV gamma is equal to constant. This is adiabatic index. So in the adiabatic का मतलब क्या है, there is no transfer of heat. Are you getting? यस टीचर। Hmm. Now next is about the equilibrium. Now can you tell me what is equilibrium? Basically, equilibrium is the balance which is present. पूरा डिफाइन करो अच्छे से, बैलेंस कहाँ किधर कैसे, कहाँ प्रेजेंट है बैलेंस? Uh, Equilibrium is the balance which is present between a product and a reactant by a by the हाँ ठीक process है, of balancing equations. यस, हाँ ये तुमने बराबर बोला कि ये प्रेजेंट होता है बिटवीन द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। तो हम जब देखते हैं कि मतलब, और यू कैन से इन द केस ऑफ इक्विलिब्रियम देयर इज नो चेंज, नो चेंज इन thermodynamic. Okay, there is no Okay. change in thermodynamic property, pressure, volume, temperature of the system. ठीक है ना? तो इसके अंदर जी। में कोई चेंज नहीं होता है। Now we'll see cyclic process. Now what do you mean by cyclic process? होता क्या है cyclic process में? साइक्लिक प्रोसेस में बेसिकली वो रिएक्शन फॉरवर्ड भी होता है बैकवर्ड भी होता है ऐसे। नहीं, इसमें क्या होता है कि अगर कोई सिस्टम अलग अलग फेसेस में चलता है, इफ अ सिस्टम गोज थ्रू डिफरेंट चेंजेस, और हम्म। फाइनली obtains its initial position, और फाइनली वो इनिशियल पोजीशन उसको मिल जाती है, then it is known as cyclic process. Hmm?
सो इसके अंदर में दो चीज है कि इसके अंदर में डेल्टा यू है, वो भी 0 होता है, और डेल्टा एच है, वो भी 0। हाँ, Okay, teacher, done. फाइन। नाउ अब हम देखते हैं कि ये साइक्लिक प्रोसेस है, इसके अंदर में अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूं, व्हाट वी विल सी, सपोजिंग दिस इज V1, दिस इज V2, ये वॉल्यूम बताता है, ये प्रेशर बताता है, इधर P1 है, इधर P2 है। सो यहाँ V2 से बढ़ता 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 P1 पे आया। तो हम क्या देखेंगे कि अगर इसने सारे प्रोसेस चेंज कर लिए तो ये कंटिन्यूअसली सर्कल में घूमेगा। तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस, कंटिन्यूअस चलता जाता है। गेटिंग? नाउ नेक्स्ट इज, रब कर दो। नहीं मैम, 1 सेकेंड। ठीक, ओके ओके, ठीक ठीक ठीक। हाँ मैम, हो गया। ओके, सो अब मुझे एक चीज बताओ कि एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लिखो। एन आइडियल गैस, an ideal gas expands isothermally from 10 raised to minus 3 meter cube to 10 raised to minus 2 meter cube at 300 Kelvin against a constant pressure of 105 Newton meter square. The work done on the gas is, बताओ क्या वर्क डन है गैस पे?
जस्ट 1 मिनट मैम, अभी आंसर आने ही वाला है। हाँ हाँ ठीक है, वेटिंग।
Yeah, teacher. Minus बोलो 900 joules. 900 जूल्स और 900 किलो जूल्स. I'm getting joules. पक्का? पक्का. क्या बता दो. First of all, P exterior will be 10 raised to 5 Newton meter square. फिर इनिशियल वॉल्यूम ये रहेगा 10 रेज टू -3 मीटर क्यूब. फिर उसके बाद फाइनल वॉल्यूम 10 रेज टू -2 मीटर क्यूब. हाँ. फिर वो चेंज इन फॉर्मूला, चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी, वी एफ माइनस वी आई करना है. उसके बाद आ जाएगा 9 टाइम्स 10 रेज टू -3 मीटर क्यूब. वेरी गुड. सो हम क्या देखते हैं कि वर्क डन इन रिवर्सिबल कंडीशन. वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस. फर्स्ट क्या है? आइसोबारिक. आइसोबारिक में क्या होता है? वर्क डन विल बी इज इक्वल टू प्लस VH माइनस VL. सेकेंड में आइसोखोरिक प्रोसेस. आइसोखोरिक प्रोसेस में क्या होता है? डेल्टा V इज इक्वल टू 0. सो वर्क डन is equal to 0. Okay. So I think this much is enough for today. In next class we will go for isothermal process. इसका मुझे फॉर्मूला बताना है 2.303 RT adiabatic process और फिर उसके न्यूमेरिकल्स विल डू. ओके. तो लास्ट क्लास काफी सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे. ओके. चलो बाय. ओके. बाय टीचर.